Can you hear me? Hello. जी पीयूष जी, हाउ आर यू? Good, Suraj. अभी वेट करते हैं सर, लेट पीपल ज्वाइन. Yeah, sure. Hello Piyush ji, hello Surat sir. Very good afternoon. हाउ आर यू? All well. Hi, Naman. पीयूष जी आपकी आवाज थोड़ी धीरे आ रही है. Can you hear me now? Yeah, Is it fine. better? Perfect. So how's the weather in Mumbai? So I came down from I was in Delhi. Now came अच्छा. down Okay. to Calcutta yesterday itself. Okay. What about you? Look, you are in Ahmedabad? I'm in Ahmedabad. Yeah, it's quite cold Oh. here. Almost it goes up to 16 degree in the evening. Night, sorry. 15, 16. I went to around Manali and Atal Tunnel. Over there, the degree was like -6. Oh my God. And Oh, yeah. देखो 2 डिग्री तो दिल्ली में ही है, तो फिर Degree. It rained in Delhi, right? हाँ, Couple of it days is back. it is very grey outside. Bharti madam, good afternoon. गुड आफ्टरनून नमन. सूरज जी कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है जी, अब ऑल इज गुड यही कह सकते हैं. हाउ इज दिल्ली? देखो वर्क फ्रॉम होम कर दिया हम लोगों ने, तो सो दिल्ली इज कॉम्प्लिकेटेड टू बी विद. जो बॉम्बे का हाल है वो दिल्ली का हाल है. बॉम्बे का ज्यादा हालत खराब है. दोनों में एक ही जैसा है, मेरे को नहीं लगता कोई फर्क है, बट चैलेंज है अभी. नेक्स्ट 1 वीक इज वेट एंड वॉच, आराम से ही रहना चाहिए, इज व्हाट आई वुड से. पीयूष जी कहाँ से अटेंड कर रहे हैं? I came down to Calcutta. ओ So everyone has gone work from home right now. राइट राइट. आज का अटेंडेंस अच्छा है, 100+ है. શૈલેષ sir, કેમ છો? Good afternoon. Sir, તમારું mic mute છે. નમનભાઈ વેરી ગુડ આફ્ટરનૂન સાહેબ, મજામાં? All well, all well. Surajji, want to introduce to Mr. Sailesh Patel. He's a past president of GSPM and very active person in all the activities that is being done by GSPMA or PLEXCONNECT or any event is happening around plastic. Sailesh sir is there. He's a stalwart of Thank the you very industry. हेलो हेलो, टू आज एवरीबॉडी. पीयूष जी सूरज नई जी नई टेक्निक सिखाएंगे. नमस्ते सर. नमस्ते सर जी. Any technique to क्या मतलब it is one of the tool which we see a lot of attraction. So as a startup, we are growing at a rate of 25% quarter and quarter because of this product only. So we are selling one product only in India. So that is giving us a good business. So in So export, Piyush, we will be doing this as a very interactive discussion. right, absolutely. तो आपको बीच में लोग डिस्टर्ब भी करेंगे, तो आप वहीं पे उनको सोल्यूशन देना. दैट इज व्हाट मेक्स इट मोर इम्पैक्टफुल. राइट. मैं 2-3 क्वेश्चन भी पूछ लूंगा, उनको बोला भी हूँ. जी मतलब जी गिफ्ट भी दे दूंगा ठीक है. नहीं, अपने गिफ्ट तरफ ना से. दो. आप अरे आप एड्रेस भेज देना, मैं एक स्वीट सा गिफ्ट दे दूंगा उनको थोड़ा. सर कोरियर वाले सबने बंद करके रखे हुए हैं. आप सिर्फ जो देना ना, आप अमेज़न का गिफ्ट वाउचर भेजो ईमेल हाँ. से. पहले तो सबवेंशन भी मिलता था, वो भी अभी बंद हो गया है, तो अभी कैसे हाँ. फाइनेंस करना है वही जानना है आपसे. हाँ, राइट. Especially like MSME, SME exporters, like overall they contribute around 40% of the business in India.
I'm not sure हाँ the skewness of that particular to plastic industry, but with other industry, especially, we are seeing a lot of demand. मतलब finance is one of the thing, and especially these SME MSME exporters doesn't have too much collateral. तो मतलब collateral रहता ही नहीं है, बैंक फाइनेंस देती नहीं है, एनबीएफसी के पास आते हैं तो उन लोग 16 से 22% दे देते हैं. तो ऐसे हाँ करके देर इज लॉट ऑफ प्रॉब्लम. एंड इनफैक्ट अभी तो हम लोग के यहाँ मतलब मोस्ट ऑफ द बैंक्स हैव टाइड अप विद अस. आईसीआईसी बैंक जो सबसे बड़ी बैंक है वो हम लोग के साथ पार्टनरशिप कर ली है. ठीक है. हाँ तो साउथ इंडियन बैंक ऐसे बहुत सारे, अभी तो मैं 3 बैंक्स क्लोज किया हूँ ये क्वार्टर. अब नेक्स्ट क्वार्टर येस बैंक एचडीएफसी सब के साथ ऑलमोस्ट अग्रीमेंट साइन हो गया हम लोग का. So we will onboard them as well. So bank itself doesn't have such kind of product. So let's see. all of us are very excited today to listen to you, Piyush. Yes. And आप इसको हिंदी इंग्लिश का मिक्सचर रखना, Okay. so everybody is most comfortable. Sure, sure. Don't jump entirely to Hindi or entirely to English, because a lot of people are, they're very senior people today. So we will see how it progresses. Sure. Shyam sir, very good afternoon. श्याम भाई नमस्कार साहब जी. श्याम भाई जरा कैमरा चालू करिए तो आपका दर्शन हो जाए हमको. अग्रवाल साहब नमस्कार. नमस्ते सर. नमस्ते, कैसे हैं साहब? बस ठीक है. हाँ, अब आएगी आवाज. अब आ रही है आवाज आपको? आ रही है साहब, आ रही है. चलिए बढ़िया है. आज आप भी आ गए इस पे एज एक्सपर्ट है ना. साहब कहीं भी सीखना मिलता है तो फिर आना ही पड़ेगा ना. हाँ बात तो अच्छी है साहब. दो बात, एक सीखने को मिलता है और थोड़ा बहुत मुनाफा भी होगा. ये साहब सिखाएंगे कुछ पीयूष जी तो
एक्सपोर्ट फाइनेंस में जो We learn from you. आप सिखाएंगे तो कैसे सस्ता फाइनेंस लेना है वो सिखाएंगे, तो उसमें कुछ सीखेंगे तो थोड़ा बहुत कंपनी को मुनाफा तो करवाएंगे ना साहब। नहीं नहीं बिल्कुल साहब, अच्छी बात है। अपन तो कंपनी के पीयूष जी, आप पे बहुत प्रेशर है, ध्यान रखिएगा आज। हाँ नहीं नहीं अगर आज डॉलर 1 रुपया नीचे गया तो इसी चक्कर में जाएगा कि लोग पहले हेज करके रखेंगे। नहीं, hedging is also one topic which I can cover because most of our remittance is in foreign currency. So usually small and medium-sized exporters again pay a lot of heavily premium to get their risk hedged, right? So how can a factoring as a tool can mitigate that cost as well? We will learn about it. और अभी तो सबवेंशन चला गया तो उसके सामने कैसे लो इंटरेस्ट रेट में फाइनेंस लेना है वही अभी जानना है साहब। हाँ सर, अब तक तो क्या था कि सबवेंशन में 5% मिलता था, हाँ तो फिर right. कॉन्ट्रैक्ट कर लेते थे तो वो 1% इंटरेस्ट रेट में पैसा मिल जाता था। ये तो सर मैं हाँ 0% में फाइनेंस हो जाता था। हाँ राइट सबवेंशन चला गया है तो फिर अभी कैसे करना है वही आपसे सीखना है साहब। सर मतलब आई कैन टेल यू द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस राइट, बट इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा हम लोग का जैसे इज ऑन दी हायर साइड। मतलब अगर आज मैं वो जनता को ऑलमोस्ट टारगेट करना चाहता हूँ, मतलब ये एक्सपोर्ट में होती है, मतलब देर इज अ मार्जिन बिजनेस, आई विल नॉट से दैट इट इज नॉट अ मार्जिन बिजनेस फॉर सर्टेन कैटेगरी, देर इज अ ह्यूज मार्जिन, but the real problem what we as a data company, like as a fintech, what we see is that apart from a cheaper finance there is also a one set of audience who doesn't get finance only, right? हाँ तो अब बैंक के पास जाते हैं तो शायद वो अभी जस्ट चालू कर रहे हैं तो उनके पास कोलैटरल नहीं रहता, सिक्योरिटी नहीं रहता है, सिक्योरिटी नहीं रहता है तो उनको पैसा नहीं मिलता है। तो विल कवर दैट एज वेल, तो देखते हैं। और सबसे इजी फाइनेंस तो सर सस्ता है कि एडवांस ले लो, buyer वो मिलता नहीं है, वो बायर ऑलरेडी इंक्लूड्स इन इट्स कॉस्ट, तो वो एक प्रॉब्लम हो जाता है, चिकन एंड एग। असली बात तो सारे बिजनेस की यही है, चिकन एंड एग वाली। प्रॉब्लम क्या है कि सब लोग वेजिटेरियन बैठे हैं, ना चिकन की जरूरत है ना एग की जरूरत है, अब क्या करें बताओ। हम लोग को तो प्लास्टिक की जरूरत है। हाँ भारती जी स्टार्ट करें। Yeah, Mr. We will Drew wait is for also here. 2 more minutes because we have 100 plus registration. तो ठीक है, Right now we are 40 only. चलो ठीक है, 2 मिनट और देख लेते हैं। Yes. श्याम भाई आज कुछ बोल नहीं रहे हैं, पर्दे के पीछे बैठे हैं श्याम भाई। कौन? श्याम टिब्रेवाल? हाँ श्याम तिब्रेवाल। सर नमस्कार। नमस्कार साहब जी, अभी आवाज आई आपकी। मैंने आवाज में एक्चुअली में सर। विद्वानों की बात सुन रहा था हाँ कि हाँ हाँ कि एकदम जो बातें हो रही थी वो काफी कंटेंटफुल थी एक्चुअली देखा जाए तो। लेकिन अब सवाल ये है कि ये फाइनेंस में सरकार ने इंटरवेंशन, जो इंटरेस्ट इंटरवेंशन बंद किया, वो उसमें क्यों नहीं चालू कर रही सरकार? सरकार को एक तरफ टारगेट दिया है इतने हजार, मतलब उन्होंने, सरकार ने बोला है कि भाई हमको इतने मिलियन एक्सपोर्ट करना है, इतने मिलियन का, और एक तरफ वो इंसेंटिव सब बंद करते जा रहे हैं, तो कैसे पॉसिबल होगा? वो ये नमन भाई को बोलते हैं, वो प्लेक्स काउंसिल वाले भेजे लेटर वगैरह सरकार को, Right. क्योंकि उनकी जान पहचान और वो बहुत ज्यादा है हमारे हिसाब से। अभी अभी तो सभी लोग पावरफुल लोग हैं, सरकार अपनी है और अपन सरकार के हैं, इसलिए सबकी वॉइस महत्व रखती है। तो आप एसोसिएशन से, चैम्बर से सरकार को रजूआत करनी चाहिए कि भाई एक्सपोर्टर्स को आप कितनी, देखो MEIS बंद कर दिया, रोड टेप का कोई उसमें रोड टेप उन्होंने बोला था लेकिन वो उतना प्रभावशाली नहीं रहा, या इंसेंटिव उसमें कुछ नहीं है एक्सपोर्टर्स को। अभी वो इंटरेस्ट का जो सबवेंशन है वो भी बंद कर दिया, तो और कैसे, मतलब सब इधर शिपिंग लाइनों का भाड़ा बढ़ गया, आपको मालूम है। ट्रेन फोर्डिंग एजेंट भी अपनी मर्जी से जो लेते हैं वो लेते हैं। तो ये सब चीजें जो है थोड़ी सी
ठीक है, टाइम बीइंग कुछ एडवर्सिटी नहीं आ रही है, अपना एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, लेकिन जब तकलीफ आएगी उस टाइम 2 मिनट में सॉल्यूशन भी नहीं निकलेगा मेरे ख्याल से। नहीं साहब, एक्सपोर्ट तो कहाँ बढ़ रहा है? ऐसे एक्सपोर्ट तो इसलिए दिखाई देता है कि क्योंकि वो शिपिंग लाइन का और जो मटेरियल का प्राइस बढ़ गया है, इसलिए सबकी प्राइस बढ़ी है। उसकी वजह से सबको लगता है कि हाँ एक्सपोर्ट बढ़ा है। वॉल्यूम टर्म में देखो तो क्या है, आप वैल्यू टर्म में देखोगे तो बढ़ेगा एक्सपोर्ट की, हाँ लग बढ़ा है बराबर है, लेकिन वॉल्यूम टर्म में देखोगे आप तो वो कहाँ, वो ज्यादा नहीं बढ़ा है। दूसरी भी हार्डशिप बहुत है। हमारा माल हाँ। एक्चुअली हमने CIF पे बेचा हुआ था यूएस में। अभी वो यूएस पोर्ट पे जाके माल पड़ा, वहाँ ड्राइवर नहीं है, जो ट्रेलर हैं उन पे ड्राइवर नहीं है, वो फैक्ट्री तक माल नहीं पहुंच रहा है पार्टियों के। हाँ हाँ हाँ। Suraj sir, can we start? We are ready, Bharti. आप चेक कर लो, otherwise let us start. We are 50 now, 48 हो गए हैं, and let us start. More people will join. Yes, sir. Good afternoon, friends. Myself, Bharti Parave from Plastic Export Promotion Council, welcomes all the participants in today's webinar on export financing post COVID-19. I invite Mr. Suraj Dhawan to moderate this session. He is an IIM Kolkata alumnus. He is a specialist in international trade development. He is focusing on bridging the financial innovations in international business. Now I request Mr. Suraj Dhawan to moderate the session. Thank you. Thank you, Bharti. Good afternoon, friends. In the last 6 weeks, we are discussing several topics which can change how we should do our business, how we can make our business more profitable and interesting. आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे कि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, किस प्रकार की फाइनेंशियल सॉल्यूशंस कैन रियली हेल्प अस आउट. We have an expert from Drip Capital with us, Shri Piyush Dabriwal. Before we invite Piyush ji, I would like to invite Mr. Dhruv Sayani for his welcome address. Dhruv ji is the Plex Council panel chairman on consumer and houseware products, and he's also the director of Crystal Plastics and Metallizing Private Limited. Dhruv ji, over to you. Dhruv ji, you're on mute. Yes, am I audible now? Yeah. Yes. Good afternoon, everyone, and wishing all of you a very, very happy new year. So, friends, of course, it gives me great pleasure to discuss our agenda today on the webinar on export financing post-COVID-19, which is being organized by Plex Council as well as in association with Falcon Business Engineers, Energizers. Friends, after the passing of another year of 2021 with a lot of challenges, it's now time to welcome the new year 2022 with renewed energies, positivity, and lots of hope. The last 2 years, I think, friends, have taught us a lot of lessons through COVID. And I think the only message that all of us can take back from here is that hope, resilience, and patience is the only way forward. Friends, for your information, the cumulative plastic exports from April 2021 to November 2021 stands at US dollars 8.7 billion, which is compared to last year's figure, which was US dollars 8.3 billion, which means that there's been a positive growth of 39.2% in this figure. Nearly all panels of plastic products have witnessed a growth and have contributed largely to the growth of this export. So congratulations to all the exporters on this webinar who have contributed to achieving these figures and contributed largely to the growth of plastic in the country. If you would like to know more about these figures in detail, you can please visit our website and download our magazine that's called PLEXCONNECT, which will give you a more detailed insight about all the figures and everything as per the sectors. It's a digital magazine which is got a monthly edition which you can view at any time. So the aim of today's webinar is to help broaden the export finance options available to business units and entrepreneurs by improving understanding about the complete range of financing instruments that can be accessed in the post-pandemic scenario.
We are glad to have with us Mr. Piyush Dabriwal, Head of Channel Partnership from Drip Capital. Mr. Piyush, welcome. To deliberate on the subject and guide the participants on resolving various queries that you may be facing. We wish that we make this session as interactive as possible. So I'd request all participants to post as many questions as you have onto the chat box so that we all can learn many ideas, thoughts, and strategies from Mr. Piyush that we can implement in our own businesses. So I really hope that today's session is successful and help each one of you. Until next time, please stay safe, stay healthy, and over to you, Mr. Suraj Dhawan, for further proceedings. Thank you, Dhruv. As introduced by Mr. Sayani, Piyush Dabriwal is Partner Head Drip Capital India. Piyush ji is a CA and CFA with over 8 years of experience in financial domain. And he was earlier working in his own startup, and he has also worked with investment banks such as Morgan Stanley and Barclays. Piyush ji, as you are aware, today we have a community of plastic manufacturers, business owners, and CFOs. All of them have got one common interest, that they export. As you have heard from them, Government of India has recently done away with certain schemes which were making the export financing reasonably easy to do. And now all of us are looking forward towards solutions from you which can give us the competitive edge. जैसे ध्रुव जी ने बताया, लोग आपसे बीच बीच में सवाल भी पूछेंगे, तो हम लोग इसको हाइब्रिड फॉर्मेट में ही चलाएंगे so that people can find the maximum value. As discussed with you before, आप इंग्लिश और हिंदी का मिक्स प्रयोग करिएगा so that everybody can understand this better. Over to you, sir. Yeah. Hi, Surajji. Hi, Dhruv. Hi, everyone. Thank you for the kind introduction and Happy New Year. I hope everyone is safe out there. Most of us have started working from home. Before this session started, we were discussing about the interest subvention scheme which the government withdrew. So that was a very good scheme for which all the exporters were getting a subvention and the financing cost were coming at a very cheap rate. Uh, so that was a good boost to the exports, right? So one thing is for sure, like finance does helps any exporter in growing that business, right? Most of us here uh, understand that there is a lot of demand, especially in the plastic product market as well. There's a lot of demand across the world since COVID-19. And as a fintech company, we work on a lot on data. So this helps us like understanding where this gap is and where the export is happening. So one thing which I can assure you is that export has started growing in India, and India has not taken a severe hit on COVID, right? As a company, COVID has like some sort of a blessing in disguise where we are able to grow at a rate of 25% on a quarter on quarter, right? So today here, I will not try to address on the basic financial scheme which you can get it over YouTube or with any speakers. I will concentrate on one of the product which has a long impact on the Indian exporters, and through which in our portfolio the exporter has grown at a rate of around 29% on a CAGR basis, right? How they have grown, what is that product? Most of us might be knowing it, but over here we have come with a tweak and which helps the exporters to grow. So I've created a small presentation for you all to better understand this product. I hope my screen is visible to everyone. Just try to minimize. We can see your screen, Piyush. Yeah. Yeah. So, topic for today, which I'll be addressing, is the factoring, which has come as a strong positive tool post COVID-19, right? Factoring, most of us might be knowing is that it is bill discounting service, right? When you sell a good, you get an invoice and you discount that, right? Typically, what a bank does. But what usually new fintech startup has started doing is that with new data, we are able to analyze the track record of an exporter, and on basis of that we are able to give an extra line of credit to an exporter, right? That is what factoring is all about.
Most of the data points was covered by Drew. I was preparing a quiz so that this session is more on the interactive session, right? So if all the participants can see, like, can you tell me which is the biggest importer country for plastic goods, right? Can anyone tell me? And obviously there is a price for it. It's a small price. Don't worry, I'll send it across to you. But just to make it more interactive, can someone in the participant tell me which is the biggest country where So Plex India is Council members are not, Plex allowed to? Council Yeah. office bearers should not answer this. Right. Right. Let our exporters answer this. Yeah, yeah. Because before financing, the biggest thing is like whether we know where we are shipping that product or not. So where is the demand, right? So if anyone can answer. United States. Yeah, US is there. And second most? UK. United Kingdom. Yeah. So basically, US and Europe is contributing around 50% of our entire demand of plastic industry, and we should target that, right? And if you, there are various website in the current industry, in the current internet world, where you can identify which all the buyers are there who are taking, who are importing goods. So you can target that particular buyer. Apart from this, like today, I'll be discussing about the finance. You can note down my contact details, and if you want certain data points, I'll be happy to share with you that website, and you can straight away get to know which buyer you should target, right? How much plastic goods we are exporting in India, that was targeted, answered by Dhruv itself. Like, can someone tell me on a CAGR basis, like on a yearly basis, how much export does happen in India? Like, It's about $8 billion. yeah, about 10, it is around $10 billion. Yeah. It is around 8.6. So around $10 billion we are contributing to Indian exports. So that's a very good healthy figure. And I believe we are like setting a target of around a growth of 25%, right? How does this 25% will come? Obviously with new set of buyers and new regions. So we need to identify new regions, and we also need to identify a channel, which is financing channel, which will help us to make that goods and try to sell it to a buyer, and at the same time recover the money back and plow that profit or that money back into the system, into our business, so that we grow on an annual basis, right? So if you see the different categories of plastic, I see a lot of growth coming, especially in the human air product, houseware, then pipes and fitting is one of the sector which we see a lot of demand. There are new buyers who wants to consider India as an option apart from China. So we should see all these subsector as well, apart from financing, like concentrate on these products which will help us to grow, right? My point is very clear, like demand is there in the world, and India is known for the production, low cost production. And with China issue, China US issue, it has given some kind of better edge to us in getting our exports grow, right? During COVID, finance has become one of the key challenges, because we need to understand there were various NBFC, there were various small financial institutions who were giving finance prior COVID, but during COVID, they have gone some kind of bankruptcy, or they have downsized their risk. So the channel which was supporting the existing export market has somehow taken a hit, right? And that is how fintech startup like Grip Capital has emerged one of the strongest tool for an exporter, right? So just to begin with, what Drip Capital is doing, we are a global fintech startup and solving a common mission across the world, right? So for SME and MSME sectors, we understand that we have the intent to do business. हम लोग का intent है business करने का, but somehow government का support नहीं मिलता है, या we do not get adequate finance, तो उसके कारण वी आर नॉट एबल टू ग्रो दैट, राइट? तो ड्रिप कैपिटल क्या करते हैं, वी डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी। सो उससे पहले आप समझते हैं, जैसे कि आज अपन मोबाइल यूज करते हैं, राइट? अपन यूट्यूब सर्च करते हैं या फेसबुक सर्च करते हैं, राइट?
there are companies who are taking data, analyzing the data, and showing you a filter content, right? There's someone. So they are showing you a filter content, right? So as a data analytic company, like we work a lot on the data and we take a call on the exporter by analyzing the data. So data ही हम लोग का एक सिक्योरिटी है, उसके बेसिस में हम लोग आपको फाइनेंस करते हैं. तो हम लोग के यहाँ पर कोई फिजिकल एसेट का जरूरत ही नहीं है. मतलब आप बोलोगे कि मेरे पास मशीनरी है, मशीनरी नहीं भी है या कोई सिक्योरिटी नहीं भी है, तब भी हम फाइनेंस कर सकते हैं आपको. कितना फाइनेंस कर सकते हैं, कैसे करते हैं, we will come to that stage later. The second biggest concern is that एक्सपोर्ट क्या होता है कि तुरंत होता है, बहुत सारी जगह में होता है कि वी गेट अ सीजनल ऑर्डर, बट अब क्या है उसके लिए जब पैसा चाहिए रहता है, कोई बैंक्स में जाते हैं तो आपको बहुत सारे पेपर वर्क करने होते हैं, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो यूजुअली बहुत टाइम लग जाता है और इतना देर में शिपमेंट निकल जाता है, राइट? तो ओवर ईयर वी हैव ट्राइड टू एड्रेस दैट प्रॉब्लम थ्रू दिस प्रोडक्ट by giving you a complete solution, right? तो थोड़ा एक नंबर्स वाइज जाते हैं हम लोग, क्या इम्पैक्ट किए कि आप मतलब आप मेरे पे भरोसा करो या ना करो, तो कम से कम वो तो देखे. तो वी हैव डन अराउंड $2 billion ऑफ डिजिटल ट्रेड फाइनेंस. सो INR के टर्म्स में हम लोग ऑलरेडी 15,000 करोड़ डिसबर्स कर चुके हैं एंड वी आर वर्किंग विथ मोर देन 1,000 एक्सपोर्टर्स. अभी का नंबर शायद 1,150 के करीब है. तो वी आर वर्किंग विथ मोर देन 1,000 एक्सपोर्टर्स इन इंडिया एंड प्रेजेंट अक्रॉस इंडिया, राइट? और हम लोग का पार्टनर एंड वी हैव रेज्ड मनी, like we have raised around $500 million through tier 1 investor like Excel and Sequoia. So ये बहुत बड़े इन्वेस्टर है, जैसे आप ओयो रूम, ओला देखोगे, ये सब कंपनीज में ये सब कंपनीज पैसा लगाई है, राइट? सो वी हैव द बैकिंग ऑफ सच काइंड ऑफ इन्वेस्टर एंड अगेन वी हैव डन लॉट ऑफ पार्टनरशिप विद एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जैसे अभी प्लेक्स काउंसिल के साथ अपन कर रहे हैं. हम लोग के साथ बैंक्स के साथ भी पार्टनरशिप है. So bank also doesn't have such kind of product where they have tied up with us and we are co-develop, like हम लोग साथ साथ partnership करके we are trying to use this product and give it to the exporter to grow that business, right? तो अब एक स्टेप पीछे चलते हैं, प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या है प्रॉब्लम, राइट? तो प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में 40% एक्सपोर्ट जो कंट्रीब्यूट करते हैं वो है एसएमई और एमएसएमई. और एसएमई एंड एमएसएमई जब इतना कंट्रीब्यूट करते हैं, इट इज़ द बैकबोन फॉर द इंडियन इकोनॉमी. जब भी आप स्कीम वीम देखोगे, हमेशा एसएमई और एमएसएमई के बारे में बोलते हैं, राइट? क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोग मेजर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, राइट? अब बट जब इतनी बड़ी जनता है, ठीक है, इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? हम लोग जैसे मेरे एक कजन अंकल है, वो भी एक्सपोर्टर है, राइट? ही इज ऑल्सो स्मॉल एंड मीडियम साइज एक्सपोर्टर. तो उनका क्या प्रॉब्लम, सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है, वो बैंक के पास जाते हैं फाइनेंस के लिए. बैंक बोलता है कि मुझे एक सिक्योरिटी दो, मुझे कोलैटरल दो ऑन द बेसिस ऑफ विच वी आर एबल टू फाइनेंस, राइट? तो शायद वो एसएमई और एमएसएमई के पास रहता नहीं है वो कोलैटरल, ठीक है. अब वो क्या करते हैं कि फिनेंशियल्स, बहुत सारे हमारी जैसी जनता के पास फिनेंशियल्स नहीं होगी, आईटीआर कॉपी नहीं होगी, सिविल नहीं होगी, मतलब बहुत सारे बैंक्स को अगर फाइनेंस करना होता है, सो दे नीड लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड लॉट ऑफ पेपर वर्क, राइट? तो बहुत सारे एसएमई और एमएसएमई होता है कि वो दरकार ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि ये क्या होता है, उनको बिजनेस करना आता है, राइट? तो वहां पर वो उलझ जाते हैं, राइट? दे डोंट नो हाउ टू टैकल दैट एंड दैट इज हाउ सम ऑफ द स्ट्रक्चर्ड बैंक्स आर नॉट एबल टू ऑफर देम द लिमिट, राइट? सेकेंड एक आता है कि एक्सपोर्ट मार्केट में क्या होता है, एलसी और नॉन एलसी होता है. लेटर ऑफ क्रेडिट मीन्स कि लेटर ऑफ क्रेडिट वो होता है जैसे कि एक तरह का एफडी होता है. तो बायर बैंक पेमेंट बैंक को बोलता है, एक्सपोर्टर बैंक को, कि भाई ऑन द ड्यू डेट हम लोग पैसा दे देंगे, बायर बैंक विल पे बैक टू एक्सपोर्टर, राइट? तो बट एक तरह का एफडी हो गया कि भाई माल बेचो, पैसा तो आना ही है, क्योंकि बाहर की बैंक एक वो गारंटी दे रही है कि भाई पैसा मिल जाएगा. बट हम लोग बहुत सारे एक्सपोर्टर्स होते हैं जो बहुत न्यू है इंडस्ट्री में या फर्स्ट टाइम एक डील कर रहे हैं बायर के साथ, तो हर बायर लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं देता है, राइट? हमें तो लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं देता है, तो क्या प्रॉब्लम आता है, क्रेडिट गैप आ जाता है, राइट? तो अगर आप यहाँ से यूएस बेचोगे 60 डेज आ जाता है, तो आपको वेट करना पड़ेगा वो 60 डेज के लिए जब तक आपका पैसा आए, राइट? तो एक बहुत बड़ा अनसर्टेनिटी आ जाता है, रिस्क आ जाता है कि वेदर वी विल बी एबल टू गेट बैक द मनी, या वो 60 डेज के लिए बैठे रहो. तो बहुत सारी चीज इशू आ जाती है, राइट? एंड सेकेंड क्या होता है कि
every product, most of the product in India has a seasonal demand, राइट तो जैसे अभी अक्टूबर टू दिसंबर का मंथ गया था, वहाँ टेक्सटाइल के लिए बहुत बड़ी सीजन है इन यूएस एंड यूरोप, जहाँ पर बहुत हाई डिमांड होता है बायर्स का। तो अब क्या होता है कि जब एक एक्सपोर्टर को पता है कि अक्टूबर टू दिसंबर में हाई डिमांड है, तो उसको हाई एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। उसका रॉ मटेरियल का कॉस्ट, उसका लेबर कॉस्ट, उसका वर्किंग कैपिटल वुड बी ऑलवेज ऑन अ हायर एंड, राइट? So, to cater to that, आवाज नहीं आ रहा आपका। hello, can you hear me? Hello, आवाज आ रही है? You're We audible. can, we You're can hear audible. you. We can hear you. We can hear Yeah, you. we can hear आवाज you. तो आ रही है। हाँ, शायद मैं ये माइक को और पास में लेके बोलता नहीं हूँ। सर, क्लियर है, क्लियर है। आप कैरी ऑन करो पीयूष। हाँ हाँ, आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो इसमें, अगर आपको डिस्प्यूट लगता है कि ये सब इशू नहीं है, तो आप प्लीज क्वेश्चन पूछो मुझसे। मतलब आई वांट टू मेक इट मोर ऑफ ए इंटरेक्टिव सेशन, राइट? तो अब क्या होता है कि पीक सीजन हो जाता है। पीक सीजन में यूजुअली कोई एक स्ट्रक्चर्ड बैंक विल नॉट बी एबल टू मेक अ एक्स्ट्रा लिमिट, आपको एक्स्ट्रा क्रेडिट नहीं दे पाएगी, क्योंकि आपका उतना कोलैटरल रहेगा नहीं, उतना सिक्योरिटी नहीं रहेगा, आप उतना डिपॉजिट भी नहीं करोगे वो सिक्योरिटी, राइट? खाली सीजनैलिटी के लिए, राइट? और एक इशू आ जाता है कि सपोज आप रिस्की कंट्री में बेचना चाह रहे हो, अफ्रीका में बेचना चाह रहे हो, ठीक है? आप अफ्रीका में बेचना चाहते हो, बैंक बोलेगा या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलेगी कि भाई मुझे नहीं रिस्क लेना है। ऐसा नहीं है, मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ बैंक्स के लिए, बैंक हैज देयर ओन रिस्क स्टैंडर्ड विच दे वांट टू फुलफिल। एंड हम लोग देखिए बहुत सारे एनपीएज हुए हैं, सो इट मेक सेंस फॉर अ बैंक टू बी अ मोर प्रूडेंट, राइट? बट एज अ स्टार्टअप हम लोग काफ़ी डेटा पॉइंट्स एनालाइज करते हैं, एंड वी अंडरस्टैंड ऑल दीज क्वेश्चन, राइट? कि न्यू एक्सपोर्टर होगा, उसके पास न्यू बायर होगा, शायद एलसी दे नहीं सकता, राइट? ओपन अकाउंट डीए डीपी में ट्रांजैक्शन करता होगा, तो उसको क्रेडिट चाहिए, राइट? तो हाउ डू वी टैकल टू दिस प्रॉब्लम, राइट? सबको को ये प्रॉब्लम समझ में आया? फर्स्ट ऑफ ऑल, एलसी का मतलब डीए डीपी। इफ यू वांट मी टू गेट इनटू डीए डीपी ट्रांजैक्शन, आई वुड हैप्पी टू आंसर दैट एज वेल। तो प्रॉब्लम क्या है कि इंटेंट है बिजनेस करने का, मार्केट भी है यूएस, यूके और अभी थाईलैंड, तो बहुत सारे कंट्री में मार्केट भी है, बट क्या है कि फिनेंस नहीं है, राइट? तो फिनेंस कैसे अपने यूज कर सकते हैं, ये अब मैं बताता हूँ। अगर इफ यू डू नॉट हैव एनी क्वेश्चन, देन आई कैन स्टार्ट ऑफ। डू वी हैव एनी क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स? अभी आप स्टार्ट किया, कैरी ऑन पीयूष। हाँ, परफेक्ट। तो अब एक एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जैकेट है, राइट? आई एम अ मैन्युफैक्चरर इन बॉम्बे एंड आई एम मेकिंग दिस जैकेट। आई एम अ स्मॉल एंड मीडियम साइज एक्सपोर्टर एंड आई हैव गॉट अराउंड 7 करोड़ रुपया मेरे बैंक अकाउंट में, राइट? तो $1 मिलियन है मेरे पास, ठीक है? अब मेरे पास एक यूएस का बायर आया एंड ही वांट्स दिस 1,000 or 10,000 pieces of this jacket to be shipped to US एंड द क्रेडिट पीरियड इज 60 days। तो अब मुझे क्या लगेगा कि यार एक ऑर्डर आ गया, अब इस पे बनाते हैं, अब इसको मैन्युफैक्चर करके बेच देते हैं। अब क्या होता है कि मुझे 60 days वेट करना पड़ेगा टू गेट द पेमेंट बैक, राइट? तो अब ये और इतनी सेकंड में क्या हुआ कि एक यूरोप का बायर आया और आपको एक नया ऑर्डर दे रहा है, राइट? अगेन टू मेक द सेम जैकेट 10,000 pieces, राइट? बट आपका क्या हुआ, वो जो 7 करोड़ रुपया था वो आपका एक ही ऑर्डर में लग गया, क्योंकि आप वो यूएस में बेचे हो। अब डे 10 और डे 11 में नया ऑर्डर आया है, आपके बैंक अकाउंट में पैसा ही नहीं है रॉ मटेरियल बाई करने के लिए, लेबर को पैसा देने के लिए, वो वर्किंग कैपिटल नहीं है टू फुलफिल दी सेकंड ऑर्डर। सो द प्रॉब्लम इज नॉट कि आपके पास परचेज का रिक्वेस्ट कम है, आपके पास है कि वो वर्किंग कैपिटल नहीं है, राइट? सो हम लोग क्या बोलते हैं कि बॉम्बे एक्सपोर्टर में जैसे ही गुड्स बनाया, गुड्स डिस्पैच किया, ऑन द वेरी फर्स्ट डे आप ड्रिप कैपिटल के पास आओ, हम लोग क्या करेंगे, वो 7 करोड़ का 80%, $1 मिलियन का 80% आपको डे 1 में दे देंगे विदाउट एनी कोलैटरल, आपको डे 1 में दे देंगे। और जो बाकी 20% है, राइट? सो वो हम लोग देंगे जब बायर हमें पेमेंट कर देगा। सो वेन एवर द बायर पेज 100% टू ड्रिप कैपिटल, वी विल रिलीज दैट 20%। तो प्रॉब्लम आप ये समझो कि आपको जब 5.6 करोड़ मतलब 7 करोड़ का अगर आपको 80%, 5.5 करोड़ आपको मिल गया है, तो यू कैन सर्विस दैट न्यू ऑर्डर जो आपको यूके से वो ऑर्डर मिला है। यू कैन टेक मोर ऑर्डर्स एंड इंटरनली चर्न दैट मनी
and finance that particular order, right? तो इससे क्या होता है कि आपको डे वन में पैसा मिल जा रहा है एंड थ्रू दैट यू कैन इंक्रीज योर ऑर्डर, राइट? और ये और पैसा आपको मिल रहा है विदाउट कोलैटरल, आपको कोई रिस्क नहीं है, आपको एक भी पैसा का हम लोग कोलैटरल नहीं लेते, आपको 80% दे देते हैं. अब सिंस वी आर नॉट एन एनजीओ, we charge a small percentage and which is the most relevant point out here I believe कि कितना पैसा चार्ज करते हो, राइट? मुद्दे का बात बताओ. तो वी आर वेरी कॉम्पिटिटिव इन दी मार्केट एंड वी चार्ज अराउंड 0.7 to 0.9% पर मंथ. तो हम लोग अराउंड 0.7 से भी थोड़ा कभी कभी नीचे जाते हैं. अगर यूरोप का बायर है तो वी गो 1.5% ऑन अ CAGR बेसिस, मतलब ऑन एन एनुअल बेसिस लोअर, राइट? सिंस प्लास्टिक इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा यूरोप में बाय करती है, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट कर जाती है 1.5% रिड्यूस प्राइसिंग में. तो 1.5% अगर आप देखोगे बाई 12 करोगे तो अराउंड 12 बेसिस पॉइंट होता है, राइट? तो आप उसको और रिड्यूस कर सकते हो, राइट? तो पॉइंट ये है कि पहला दिन जैसे ही आपका ऑर्डर बना, आप डिस्पैच करो, बिल ऑफ लीडिंग मेरे यहाँ सबमिट करो, आपको 80% मिल जाएगा, बाकी का 20% वंस द बायर पे टू अस हम लोग दे देंगे. अब पॉइंट यहाँ पर ये हो जाता है कि अपने दूसरे इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं कि भाई मुझे इंश्योरेंस दे दो. ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस इज अ वेरी बिग थिंग इन द एक्सपोर्ट मार्केट. आप समझो कि कल बायर डिफॉल्ट हो गया, बैंक्रप्सी 60 डेज या 90 डेज में अगर बायर डिफॉल्ट हो गया, तो रिस्क क्या कौन लेगा, राइट? सो मोस्ट ऑफ अस गो टू इंश्योरेंस कंपनी एंड hedge our risk, right? Beauty of this factoring product by Drip Capital is that you don't need to go to a different insurance company to get an insurance, right? So ये जो मैं 0.7% बोल रहा हूँ इसमें इंश्योरेंस कॉस्ट भी आपका इंक्लूडेड है, ठीक है? सेकंड आपका होगा, कैन यू चेंज क्वेश्चन नहीं देख पा रहा. नहीं अभी पीयूष, एवरीबॉडी इज फोकसिंग ऑन द डिस्कशन. right. जैसे आप कह रहे हो कि इनवॉइस फाइनेंसिंग आप कर रहे हो, अगर हमारा कोई इंपोर्टर है जिसने हमें ऑर्डर दिया है और उसने हमें कहा है कि पेमेंट आफ्टर डिलीवरी है और पेमेंट Right. आफ्टर शिपमेंट है, तो उसका आप 80% अमाउंट नो क्वेश्चन आस्क फंड कर दोगे एक्सपोर्टर को, Right. और 70 पैसे से 90 पैसे के बीच में उसका पर मंथ का कॉस्ट बैठेगा. और आप कह रहे हो कि नॉन रिकोर्स है, इसमें हाँ, it is इंश्योरेंस का कंपोनेंट इंक्लूडेड है कि अगर आपको इंपोर्टर पैसे नहीं देगा तो एक्सपोर्टर को कोई उसमें लेना देना नहीं है. हाँ, करेक्ट? राइट. बट अब क्या होता है कि इसमें बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी आपको नॉन रिकोर्स बोलते हैं, बट बिलीव मी, नॉन रिकोर्स कभी कुछ वर्ड होता ही नहीं है ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस में. इट इज ऑलवेज अ लिमिटेड रिकोर्स. तो समझो कि अगर जब ऑपरेशनल इशू होता है, राइट, अगर आप ये ग्रे जैकेट के बदले रेड जैकेट बेच दोगे तो कोई सी भी इंश्योरेंस कंपनी आपको नहीं देगी. बट अगर बैंक्रप्सी और फाइनेंशियल डिफॉल्ट हुआ तब आपको पैसा मिलेगा, राइट सूरज जी? So any kind of quality dispute, we go back to an exporter saying कि boss, this is a quality issue. Can you give a new shipment? आप new shipment दे दो. तो in trade credit insurance there is nothing called non recourse. तो हम लोग limited recourse बेचते हैं, right? ठीक है जी, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छी हाँ, आपकी सोल्यूशन है. हाँ, मैंने right. प्लास्टिक की पाइप्स एक्सपोर्ट करी हैं और बायर ने मुझे बोला है कि एसजीएस की इंस्पेक्शन करा के दो. हाँ, मैं हाँ, एसजीएस की इंस्पेक्शन करा के देता हूँ, पेपर डिस्पैच अगेंस्ट इनवॉइस करता हूँ, तो वी कैन प्लान दिस आउट. right. ठीक है जी. और उसके बाद आप कह रहे हैं कि अगर कोई क्वालिटी रिलेटेड डिस्प्यूट आता है तो यू कैन रिकोर्स चलता है, अगर एक ट्रेड डिस्प्यूट है वो आपके अकाउंट में रहेगा. right. ठीक है जी. अब हमारे सेकंड हो रिपोर्टर्स को रिक्वेस्ट है, कोई सवाल है तो पूछिए, बिकॉज ये बहुत टर्निंग पॉइंट है डिस्कशन का. हेलो, यस सर, एक क्वेश्चन है इसी रिगार्ड में. कुछ पॉइंट्स क्वालिटी के ऐसे होते हैं जो हम लोग क्या बोलते हैं इंस्पेक्शन के थ्रू कवर कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्लॉजेस ऐसे होते हैं जो इंस्पेक्शन के थ्रू कवर नहीं हो सकते. ओके, राइट. तो वो जनरली हम लोग परफॉर्मा में लिख देते हैं कि एज पर सैंपल जो क्वालिटी है वो आपको मिलेगी. अभी हमने सपोज सैंपल वेरीफाई करवा लिए है बायर से और वो सैंपल हमारे पास वेरीफाइड है बायर के, और मतलब ऐसा डिस्प्यूट में केस आ जाता है कि बायर बोल रहे हैं सेम क्वालिटी नहीं है तो सेम क्वालिटी है, तो ये केस में मतलब कैसे रहेगा ये केस में? रिकोर्स आप करेंगे वापस बायर को कि वापस नया लॉट भेज दो, या फिर
इसमें नॉन रिकोर्स ही रहेगा? So see, it depends upon case to case basis. मतलब generally ये नहीं qualify कर सकते हैं. But we will see the nature of the transaction, right? तो वहाँ पोर्ट में अगर हमें लगता है कि क्वालिटी सही है, सब चीज़ सही है, then we will see कि वो माल कैसे बिक जाए एयरपोर्ट वो पोर्ट में, and we try to recover the money. तो हम लोग as a financial company मतलब we don't want to get into that inspection वाला thing. So that is why हम लोग कोई inspection भी नहीं कराते आपके एक्सपोर्ट के लिए. We leave it to an exporter and buyer relation कि स्पेशली वहां पर एक्सपोर्टर एंड बायर डील करे कि उनको कैसे करना है. मतलब अगर इंश्योरेंस कंपनी तो बोल देगी राइट कि भाई ये तो क्वालिटी इशू है राइट. मतलब बायर जब बोल दिया तो इन दैट केस वी विल नॉट बी एबल टू मतलब तब हमें एक्सपोर्टर के पास वापस जाना पड़ेगा कि आप न्यू लॉट भेज दो राइट. पीयूष, इसमें एक डिस्कशन है विच आई एम इंटरवीनिंग ऑन बिहाफ ऑफ आवर एक्सपोर्टर्स. सी आपने 80% उनको दे दिया एडवांस अगेंस्ट शिपमेंट राइट. कल को कोई ट्रेड डिस्प्यूट आता है तो आप उनको कह सकते हो ना आप हमारे पैसे वापस कर दो और आप बायर से अपने आप निपट लो. या बिकॉज जो आप ये कह रहे हो ना कि नई शिपमेंट भेज दो, वो तो बहुत मुश्किल चीजें होती है एक्सपोर्ट्स में कि सारा माल रिजेक्ट हो गया, नई शिपमेंट भेज दो. We are talking about commodities, we are talking about products. It is not very difficult. It is absolutely difficult to just look at that scenario. Right, Surajji, nice. And most of our exporters are not first-time exporters, neither they are e-commerce exporters. They are traditional exporters who understand the business of exports. तो गलत माल भेजना या क्वालिटी का 18 भेजना 21 की जगह वो बड़ी कठिन चीज है. Right, absolutely. So we want to target these kind of quality exporters only जहाँ उनको पता है कि क्या quality है. And sending consignment is one of the example. So we completely leave it to an exporter and buyer. How do they want to settle? Right? कि ये पैसा अगर उनको next invoice के लिए करना है, set करना है, जैसे भी करना है, मतलब sending good is one of the example. How do we settle the rejected lot? Right? ठीक है जी. सर इसमें इंश्योरेंस, हाँ जी प्लीज कैरी ऑन सर. सर इसमें इंश्योरेंस कब इन्वॉल्व होता है और कौन करवाएगा? इंश्योरेंस कंपनीज जब हम आपसे फाइनेंस करवाएंगे या हमको शिपमेंट से पहले करवाना पड़ेगा? So you don't need to do anything. Since we have like we run a very big book size, we have tied up with one of like various biggest insurance companies across the world, which helps us to give a better insurance rate, better coverage, better limit, and we are the one who does the insurance on the exporter part. So you don't need to think about anything about insurance. ओके पीयूष, आपको मैं बीच में रोकूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. एक्सपोर्टर जो है दो प्रकार की इंश्योरेंस कराता है. राइट. एक है प्रोडक्ट इंश्योरेंस बिकॉज ऑफ फायर, थेफ्ट, डैमेज व्हाइल शिपमेंट. दूसरी है इंश्योरेंस बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ मनी बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट. आप दोनों रिस्क कवर करोगे कि आप केवल नॉन पेमेंट रिस्क कवर करोगे? नॉन पेमेंट, ट्रेड क्रेडिट. तो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल आवर एक्सपोर्टर्स कि जो आप अपनी नॉर्मल इंश्योरेंस कराते हो विच इज अगेंस्ट फायर, थेफ्ट, लॉस ड्यूरिंग ट्रांजिट, वो इसमें कवर्ड नहीं है. वो आप इंश्योरेंस अपनी रेगुलरली कराओगे. इसमें केवल नॉन पेमेंट का जो रिस्क है केवल वही इंश्योरेंस का वो अंडरराइट कर रहे हैं जो आप ईसीजीसी से कराते हो. Okay, I also have a question. Please introduce yourself before you ask the question, please. Thank you. I'm Gauri Sampar. I just want to know, so on what basis do you do a credit analysis of the buyer and how long does the procedure take? Like prior to me executing an order, taking an order, how do we go about an analysis of the credit rating of a buyer? Does that have any impact on your decision on funding and financing, or is it open to any deal anywhere in the world? How does it go for you? So Gauri, very good question, I must say. I will cover that question in my next slides. How do we analyze an exporter and how do we analyze a buyer? So this is generally about the product which I am talking right now, but going forward I'll answer that question. I have one question. My one question, sir. ये अपनी कंपनी को इंट्रोड्यूस करिए सर, फिर बेटर रहेगा. जस्ट इंट्रोड्यूस and I'm calling from I'm from Gauri ji had one more question, I believe. गौरी प्लीज कंप्लीट. एक बार अंशुमन जी रुक जाओ. लेट अस फिनिश विद गौरी फर्स्ट. हाँ जी गौरी. हाँ, मुझे एक चीज और पूछनी थी कि बेसिकली आप एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट टाइप की चीज कुछ नहीं करते हैं.
Matlab, once I get an order, I normally need support for procurement. As you rightly, gave an example on, depending upon your own fund position, you'll be able to do your buying. That will define your buying power in the market, right? So basically, you're not going to support in that. It is post-shipment credit. It's basically a discounting facility added on with insurance. Is that right? Yeah, absolutely right. It is a post-shipment facility with an extra line of credit apart from your bank, right? In a collateral-free way. So you don't need any kind of pledging of any security for this kind of limit. So we give up to a limit of 2.5. Yeah, sorry. Go ahead. Sorry. We give a limit of up to $2.5 million. This will be over and above your credit line. And we do only DA, DP, and open account apart from LC. So LC are very safe in nature. So we have seen structured financial institution discounting that bill of lading or that particular transaction in a very efficient way. So our expertise lies in a DA, DP, and open account. ठीक है जी. We had one more question. Yeah, please carry on, Gauri. चलो आप पूछ लो. Open credit payment term. Okay, I understand that. Right. Thanks. So Gauri, this is the DA-DP solution where your bank was not supporting you. Yeah, I understand that, but basically this comes through only after the shipment has been made. And in all probability, after your BLs, do you give the discounting after the BLs have been issued or after the invoices have been raised? After the BL, once we get the BL copy. Proof of shipment के बाद ही payment होगी ना कि आपने माल भेज दिया. Obviously, पर मैं कह रही हूँ लेकिन DA, DP में तो most likely अगर आपकी BLs भी issue हो गए हैं and if it is being routed through the bank, your payments would normally come in maximum of about 10 days. So, unless you're giving a credit, if you're giving a 30, 60, 90 days, then of course it's a different scenario. All right, understood what you're saying. Right, thank you. We'll tell you the turnaround time, how much time we take. So we typically take less than 24 hours from the time we get the bill of lading. So within 24 hours, we are able to disburse 80%. And Gauri, one more thing before we go to the next step. इसमें जो पैसा मिल रहा है वो पर मंथ है. अगर आपको 10 दिन के लिए भी पैसा चाहिए तो आप 10 दिन के बाद अगर आपकी पेमेंट आ ही रही है तो आप 10 दिन के लिए क्रेडिट लो. जरूरी नहीं है कि आप 3 महीने 6 महीने की बात करें. 15 यूजुअली यार 15, 30, 45 डेज वैसा हम लोग का रहता है. ठीक है. नो मिनिमम अमाउंट, आप $500 का भी इनवॉइस सबमिट कर सकते हैं. मिस्टर प्लीज, इसमें एलसी मैंडेटरी है क्या? दिस इज नॉट डीपी है, एलसी है ही. एलसी. ओके, सॉरी, आई जॉइन लेट सो आई मिस्ड स्टार्टिंग. सर, इसमें डीए डीपी की कोई ट्रांजैक्शन है जिसमें आपको एलसी नहीं मिली हुई. हाँ जी. आपने माल शिप कर दिया है और बीएल आपके पास है तो ड्रिप कैपिटल आपको पैसा दे देगा जब तक आपको चाहिए. अगर पार्टी ने 10 दिन में आपके डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट कर लिए और पैसे आ गए तो 10 दिन या 15 दिन का ही ब्याज लगेगा. अरे सर, एक चीज और आ रही है कि पहले हम लोग 2 ऑर्डर भेजते थे, चाहे वो डीएडीपी की किसी भी शिपमेंट होती थी. अब बायर डायरेक्ट कंसाइन मांगता है कि कंसाइन टू बायर होना चाहिए. ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है एक्सपोर्ट के अंदर. अब वो 2 ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करता बायर, ना बीएल एक्सेप्ट करता है, वो कहता है डायरेक्ट मेरे को कंसाइन करो इसको. राइट, सो इट इज अ पेमेंट टर्म इशू, राइट? व्हाट्स योर गुड नेम? मोहन जी, राइट? हाँ जी. हाँ मोहन जी, मतलब ये पेमेंट टर्म्स के इशू हो गए कि कैसे वो होता है. सो वी कैन टॉक ऑन अ केस स्पेसिफिक बेसिस. सो इन पास्ट वी हैव डन सच काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन, राइट? तो आपके हाँ जी सर, एक चीज और है. जैसे इसमें एक मेरे को पिछले एक वेबिनार में था, उन्होंने कहा जी एलएलपी जो कंपनीज होती हैं उसके हम कोई भी उसको एंटरटेन नहीं करते. नहीं, मतलब वी डू इंडिविजुअल एलएलपी पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड. नहीं, एलएलपी आई एम टॉकिंग अबाउट एलएलपी पार्टनरशिप एंड प्रोप्राइटरशिप, दैट इज डिफरेंट. अबाउट एलएलपी व्हिच इज न्यू कांसेप्ट नाउ. एलएलपी भी करेंगे सर, आई एम सीए. तो हाँ एलएलपी भी करेंगे, कोई टेंशन नहीं. बिकॉज़ इवन इन द गवर्नमेंट स्कीम्स दे आर नॉट एंटरटेनिंग एलएलपी कंपनीज. हम लोग करेंगे. आई टेल यू व्हाट सवाल है वो भी देख लो. उसके बाद प्रेजेंटेशन खत्म करेंगे पीयूष, फिर सवाल पूछेंगे. अदरवाइज ये बहुत बीच में ही गाड़ी रुक गई. गुड टू सी. राहुल जी, आपका जो सवाल है आप पूछ लो प्लीज. You said the buyer will directly pay to drip capital, right? So how, when we execute this order with importer, how do we loop in buyer in this whole arrangement? Right.
That is I'll one. come to that now. Yeah, I'll answer that in Second, my when you said in ECGC, credit risk is covered, trade and operation risk is on the exporter. But in ECGC, even the country risk and political risk of that country is also covered. So how you see that risk? आई थिंक पॉलिटिकल रिस्क एंड कंट्री रिस्क भी हम लोग जो ECGC में कवर्ड है ना बेसिकली राहुल जी वी ट्राई टू कवर दैट ऑल दैट रिस्क So that is also part of the whole yeah credit risk. yeah so basically our point is that do no need to take separate insurance. Okay. So whatever risk is that covered in ECGC we will cover that risk. It is been covered. Okay. पीयूष जी आगे चलते हैं. आपकी स्लाइड कितनी ज्यादा है पीयूष? Yeah, I'll try to minimize it. Good to see most of us know this problem. So अब मैं फटाफट I'll walk you down through my other slides. It is more 7 to 8 slides जी, 7 to 8 slides. Okay. So we are working with 1,000 exporters, right? So what is the common USP which we see across the entire audience is first is a collateral-free capital where we do not take any security. We give a credit line up to $2.5 million, which is around 20 crore. So 20 crore up to 20 crore rupiya at a single point of time we can give you a credit. Second is interest, which we have already discussed. So left side is more on the commercial, right side is on the qualitative side, right? एक जन का question था कि what do you check, right? कि सबको को दे सकते हो क्या? So it is a 1 minute application process. We have further reduced the process and simplified it. We need 3 basic details from you all to see whether you are eligible or not. One being the import export code, second being the company name, third being what kind of product you are exporting, not the HSN code. अगर आप बता दोगे ये प्लास्टिक है मोबाइल का, ये प्लास्टिक बेच रहा हूँ मैं या जैकेट, that is good enough. So once you submit these 3 details, within 24 hours, we are able to let you know a pre-approved status, whether we can work with you or not. The second is what kind of limit we can issue. Third, what kind of interest rate we can charge to you. So we give within 24 hours, sometime within less than an hour, we are able to let you know the status कि भाई मैं आपके साथ काम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, right? So once that is done, like it is a 1 minute application process, then हम लोग का paperwork it is very minimal. Whatever is the routing document process, we follow that. अगर आपको कभी कभी क्या होता है बिल ऑफ लीडिंग मुझे सबमिट करना है, आप कस्टमर को भेजते हो, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग इट टू कस्टमर वी हैव आवर ओन एजेंट्स, आवर ओन टाई अप विद इन इंडिया, तो आप उनको भी सबमिट करोगे, इट इज गुड इनफ फॉर अस टू कंसिडर दैट, राइट? तो उसमें आपका कॉस्टिंग भी नहीं लगेगा, शिपिंग कॉस्ट भी नहीं लगेगा, वो हम लोग टेक केयर करते हैं, राइट? नाउ द क्वेश्चन इज sorry, I'm sorry. Just have a question here. Normally, RBI has a mandate that the original export documents should be routed through the bankers, through your registered AD code bankers, to the buyer's bank. So how do you take over in between? So that is B2B. So we have tied up, as mentioned, like we have tied up with ICICI Bank and we have other banking partnership as well. So we can discuss which is your AD bank. So usually the document routed is through AD bank, but see from example, if it is a status export house, right? So they have a free hand where they can route the document directly to the customer, right? And there are other exporters also where the document routing happens directly to customers. So we look into that transaction as well. I hope that answer your question, Gauri. I mean, basically, when the routing would not happen through the bank, you would physically take over the original documents and do the discounting and then transfer their same to the buyer's bank? Right. And sometimes it's upon the bank as well. Drip Capital, you are assigning the receivables to Drip Capital. Right. So, can I speak? जी जी आप अपने introduce कर लीजिए जरा एक बारी. Okay, hi everybody. I'm Ankit and I'm into exports of stationery products. So, Piyush, my question to you is regarding open account. So, I have a customer in US who has an open account policy for payment, and they pay in 60 days open account. Now, usually I'm using packing credit, where I'm although paying much less in terms of the cost that you've mentioned. I'm paying about 0.35% per month.
one problem that I face with packing credit is with the open account payment, the bank has to send the documents. And when bank sends a document, they put up a clause called URC 522. That is Universal Receivable Clause or something like that. Wherein the bank, the American bank who's issuing the open account document, they don't accept that clause along with the receivables. So in this whole arrangement, how can you help us? Drip Capital help us? So we do the invoice. So are you a status export house? We are not. We are not. Okay. And how are you routing the document right now? Bank to bank, right? Bank to bank, yes. But again, it's a huge headache because the bank who's accepting the documents, they've issued us an open account letter, and they've clearly mentioned this open account does not accept URC 522 clause. That is some universal clause which banks put up in their document collection. Right. It is a standard procedure that I'm talking about HDFC Bank, not sure about the other banks. Right. So I'm not sure about the URC, this clause which you are mentioning, but for the bank-to-bank transaction, we also have one mechanism where we have a foreign bank, Yes. where we can work on the scan copies as well, right? So if we get some kind of comfort from your banks as well, we can look into that transaction instead of you submitting to us on a physical. We can look it in a scan copy, and we can give a open credit to you and get the money from the buyer. So in that case, we need to do an buyer acknowledgement process, right? Where the buyer will promise to pay that after receiving the good or after completing that 60 days, they will be making a payment to Drip Capital. Okay. Sure. I got it. So that will be on a case-to-case basis, and we'll have to discuss it out. So I'll be giving you my contact details or my team contact details, so you can reach out to them, and we'll look And into that. how about the interest rate that we are paying in comparison to packing credit? It is almost double. So Yeah, I don't think like you should compare that packing credit like interest with this product, because that is more of a secured thing and this is one of a unsecured thing. So you can use this Okay. product on like more on the seasonal part, where you're not able to get some kind of insurance from the existing insurance company, where the bank is not able to take a risk on a particular buyer. You're doing it for the first time. It is a risky country, right? All these things. Okay. I understand. Right. Thank you. So I'll move to a different slide. Sorry, I had a question here. Piyush. Can I Yeah. ask you something? Yeah, my name is Saumil Shah. Yeah. I wanted to know that when you do this, and we already have existing facilities with our banks which are secured, and when you're doing this post shipment, do you require any NOCs from the bank, or do you require any documents from the bank? No, not at all. You don't require anything. I mean, This is for over the and banks, above your normally client. when you funded this, your existing clients, they have to submit any documents, or the banks allowed to do this after having facilities? Yeah. So it comes under RBI guidelines, where an exporter can look for a third-party factoring agency to discount their bill, and it is over and above the credit line. Okay. Piyush, before going ahead, can you just give your email ID right now, so that because our scenarios are different, if we wait for this, because you know what we do is while buying for raw materials itself, we need a finance. So that time we have already tied up with our banks. Right. So that means converting from pre to post shipment, right? Yeah. So why will you convert pre to post? Because your banks will be giving a finance at a very less rate, right? Why will you Right, try but you are not giving us pre, right? You are giving only for post. post, right? So can you just give me your email ID so that we can just see it whether we can do something on this? Sure, I'll give that. But okay, I'll give that. I already have my team member email ID, but still. आप पीयूष एक वाली दे दो. I think हाँ, ठीक है. Pranjal is also there. Maybe Pranjal. Yeah. Pranjal, if you can write it down. Should I share it on the chat? अब chat में डाल दो. हाँ, please. Give your phone number and. I'll do. चलो आगे चलते हैं.
हाँ आगे चलते हैं। Yes, thank you, thank you. Piyush ji, one more question here. I am Hitesh, and basically we are also, my company is into exports. So uh, anything that covers high sea sales also in this case? Yeah. So we cover. So we have a negative Hello. list of commodities and negative list of countries, which I'll be coming in my later slide. Okay. So Thank let me you. complete. I think most of us know and are an हाँ experienced मतलब exporter. 2 या 3 डिजाइन होंगे, दोनों डिजाइन मिला के 20,000 पीस होंगे। Ankit. Yeah. So let's go to a few more slides. Our onboarding, what someone was asking, what is your turnaround time? So our turnaround time usually lies between 5 days to 15 days. तो अगर 5 दिन में अगर आप बहुत कोऑर्डिनेट करोगे, आप मुझे डॉक्यूमेंट्स दे दोगे, आप मुझे ऑफर लेटर साइन करके दे दोगे, बायर डिटेल्स दे दोगे और बायर ऑलरेडी मेरे साथ काम करे, तो वी कैन फिनेंस in less than 5 days also, but typically we taken on an average of 13 days to finance any new exporter and buyer, right? Or obviously this underwriting is on a digital way, so most of our document required is on the digital sides. We need scan copies for your documents, and we are ready to finance. Apart from 2 documents which is required under RBI law, we take it on a digital way. अब प्रोसेस क्या होता है, मैं एक बार वॉक डाउन करा देता हूँ। 4 स्टेप का प्रोसेस होता है। फर्स्ट इज योर 1 मिनट एप्लीकेशन प्रोसेस। ये थोड़ा ओल्ड स्लाइड है, तो 1 मिनट एप्लीकेशन प्रोसेस में आप वो मुझे 3 चीज दोगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर, कंपनी नेम, एक्सपोर्ट कैटेगरी, और विद इन 24 आवर्स मैं आपको बता दूंगा कि ये ऑफर लेटर है, ये प्राइसिंग है, ये सब चीज है, राइट। आप मुझे क्या करोगे, वो प्राइसिंग का एक्सेप्टेंस दोगे, नेगोशिएट करके जो भी होगा, वी क्लोज दैट डील, एंड आप मुझे बायर दोगे, राइट। मैं वो बायर का इंश्योरेंस अप्लाई करूंगा, वेट करूंगा कि इंश्योरेंस कंपनी दे, या मेरे पास वो ऑलरेडी बायर काम कर रहा होगा तो मैं आपको तुरंत अपडेट दे दूंगा, राइट। तो वी डू 2 काइंड ऑफ अंडरराइटिंग आउट हियर। वन इज एक्सपोर्टर अंडरराइटिंग एंड बायर अंडरराइटिंग। एक्सपोर्टर में हम लोग देखते हैं कि थोड़ा जेन्युइन बायर होना चाहिए, कैसे टाइप का शिपमेंट कर रहे हैं, वेदर ही इज इंटरेस्टेड और नॉट, कोई बैंकरप्ट नहीं हो, मतलब कि जिसका सिविल बहुत ही घटिया ना हो। सो वी हैव factors of like 10 to 15 other factors which we take into account for an underwriting part, right? अगर आप मुझे बोलोगे कि एक क्राइटेरिया पे बताओ, तो नहीं, मतलब इट इज अ मिक्स ऑफ क्राइटेरिया जहां पर हम लोग अंडरराइट करते हैं। तो हम लोग एक्सपोर्टर अंडरराइटिंग एक बार करेंगे, और बायर अंडरराइटिंग क्या है कि आपके जितने भी बायर्स है ना, आप हमें दे दो, हम इंश्योरेंस कंपनी में अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि किस टाइप की कितनी इंश्योरेंस मिल रही है, राइट। अगर बाई चांस वो कंपनी पे इंश्योरेंस नहीं मिलती है, बट यू हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद दैट बायर, एंड आप बोलोगे कि यार ये बायर के साथ तो मेरा अच्छा रिलेशन है, ये बायर मुझे पैसा दे देगा, कुछ भी रिस्क हो मैं पूरा लूंगा, तो वी आर हैप्पी टू गिव यू अ recourse limit also. So earlier we were talking about non-recourse limit, but over here we can also give you recourse limit provided you have the appetite to take that risk, right? तो जब भी अंडरराइटिंग होगी, यूजुअली बहुत कम टाइम लगता है, वी अप्रूव योर अकाउंट, देन इट स्टार्ट्स विद द लीगल डॉक्यूमेंटेशन। तो हम आपको वी विल शेयर यू द क्रेडेंशियल ऑफ आवर आईडी पासवर्ड, यूजर आईडी पासवर्ड देंगे आपको, सब डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अप्लाई करनी होगी, और वंस दिस इज अप्रूव्ड, आपका पूरा वेबसाइट सब चीज रेडी हो गया, इट इज अ वन क्लिक फाइनेंसिंग, वेयर एनी टाइम यू गेट अ बिल ऑफ lading on the approved buyer, you submit that bill of lading and within 24 hours we'll give you 80%, right? अब इसमें पॉइंट आ जाता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए रहेगी, राइट? अगर आपकी पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मुझे आपके कोई सा भी आईटीआर नहीं चाहिए, कोई सा भी फाइनेंशियल नहीं चाहिए, बिकॉज वी हैव अ सिस्टम इन प्लेस through which we are able to fetch your records, and we don't need that. Only for individual LLP and partnership we will be requiring 2 years of financial and 1 year of your ITR copies, और कुछ पैन कार्ड डिटेल चाहिए रहता है, प्रोवाइडेड यू आर नॉट अ पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट, ये स्लाइड का मतलब ये है कि भाई डॉक्यूमेंटेशन बहुत ऑनलाइन है और बहुत लिमिटेड है, एंड वी हैव आवर ओन APIs which helps us to fetch your data, right? मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, पॉइंट हो जाता है कितना फैसिलिटी साइज दोगे, वो मैं बता दिया 20 करोड़ का एट अ पॉइंट ऑफ टाइम दूंगा। पेमेंट ड्यूरेशन, जैसे अभी बात हो रहा था 15 डेज, ये तो मिनिमम साइड में बात कर रहे थे, राइट। मैक्सिमम क्या होता है कि कभी कभी जाते हैं 150, 180, 360 डेज के बाद भी पैसा मिलता है कोई कोई एक्सपोर्टर को,
as a startup, we want to limit that risk. We provide a maximum limit of 120 days to begin off, right? So 120 days from the bill of lading, not from the invoice date, we can give you insurance, right? और ये टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है. How does it look? Since most of us are SME and MSME exporters, we have created our platform in a very easy way. और ऑनलाइन और ऑफलाइन असिस्टेंस दोनों मिलता रहेगा आप लोग को, जहाँ पर आपको इन्वॉइसेस मिलेगी, ट्रांजैक्शन मिलेगी. अगर आपको कोई नया बायर ऐड करना है तो आप डिजिटली ऐड कर दो. क्या पेमेंट आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, आपको सब एक ओवरव्यू मिल जाएगा. आप क्लिक करोगे तो आपको सब चीज़ स्टेटस मिल जाएगा कि क्या ट्रैकिंग है, कहाँ पर पहुँचा है, सब चीज़ आपका ऑनलाइन वे में, राइट. अब सबसे इम्पोर्टेंट मेन स्लाइड ये है कि हम किसको फिनेंस दे सकते हैं, राइट. So we have tried to simplify it and try to capture most of the exporters in India. So our minimum criteria is that we need 2 BRC closures in last 6 months. कि 2 टाइप का BRC होना ही चाहिए क्लोज. सेकेंड, एक्सपोर्ट टर्नओवर शुड बी अराउंड $200K in last 12 months. तो आपका 1.5 करोड़ का अगर टर्नओवर है तो यू आर पार्ट ऑफ दिस स्कीम, मतलब यू आर पार्ट ऑफ दिस फिनेंसिंग, राइट. कमिंग टू बायर कंट्रीज, कौन कौन से बायर कंट्रीज को हम लोग दे सकते हैं फिनेंस अगर आपका बायर वहाँ लोकेटेड है तो हम लोग ऑल द रिस्की कंट्रीज, अफ्रीका जो बहुत सारे फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं करते हैं, हम लोग अफ्रीका भी करते हैं. एंड एट द सेम टाइम we cover most of the countries apart from US sanction country. तो US sanction country ऐसी banks नहीं cover करती है. तो what do I mean by US sanction country is ईरान, इराक, अभी श्रीलंका भी आ गया है उसमें. तो ये सब कंट्रीज को हम लोग फिनेंस नहीं कर सकते. रेस्ट वी डू ईच एंड एवरी कंट्री. अब इसमें हो जाता है कि मर्चेंट ट्रेडर्स बहुत सारे होते हैं कि एक कंट्री में सपोज यहाँ से माल बेच रहे हैं, दुबई से पेमेंट आ रहा है बट वो हिट ही नहीं कर रहा है. So we cater to merchant exporters as well. So that is one thing. Third thing is not relevant, I think, for this presentation is कौन से negative list है. Since most of us are plastic manufacturers, we cover plastic manufacturers. तो एक slide भी है कैसे हम लोग help किए हैं. एक case study है plastic manufacturer के लिए, right? तो overall impact मैं इतना बोल रहा हूँ. What impact we have created in last 5 years is basically normally an exporter has grown at a rate of around 7%, but while working with drip capital, this is on an average. This is not like a cherry picked item where I have picked 2 or 3 exporters and tried to inflate number. We have seen on an average around 29% CAGR growth on an exporter. क्यों वो कर पा रहे हैं ये ऐसा ग्रोथ? फर्स्ट इज उनको खाली बिजनेस पे कंसंट्रेट करना है, राइट. इंश्योरेंस कलेक्शन सब अपने देखते हैं. Second, they are able to cater to new buyers. They are able to cater to risky countries. They are able to cater to seasonal product and all these transactions, due to which they are seeing a high growth in their overall turnover, right? Right. अब ये एक है, ठीक है, ये एक प्लास्टिक एक्सपोर्टर है बेस्ड आउट ऑफ अहमदाबाद ओनली, जहाँ पर उसको भी ये सेम चीज 3x ग्रोथ हुआ इन लास्ट 2 years. तो मेन उसका वही था कि वी आर एबल टू शॉर्टन हिज वर्किंग कैपिटल. एंड एक्सपोर्ट के लिए वर्किंग कैपिटल इज अ वेरी बिग थिंग, कि जहाँ पर हम लोग 2 या 3 days में उसको वर्किंग कैपिटल दे देते, 80% दे देते, जिससे कि वो फॉलो अप ऑर्डर में यूज कर सकते हैं, राइट. एंड कभी कभी उसका प्रॉब्लम ये था कि जो उसका लाइन ऑफ क्रेडिट था विद द बैंक was insufficient, right? So we were able to give over and above that. And second इसका ये था कि he used to deal with the buyer only on the LC payment. So once Drip started coming and discounting their invoices, he started taking open account orders, DADP type के order बहुत लेने लग गया non LC में. और non LC करने के बाद he were able to get more business out of it, right? तो ये एक चीज़ है. And again primarily US and Europe उसका buyer था, ठीक है. This is just a slide to give you a comfort that we are not new to industry, and in fact I would say कि we are one of the largest digital trade finance company in India. तो अभी हम लोग जैसे अभी 1.5 months पहले भी we raised around $150 million from investors. तो ये एक चीज़ है, ये डेमोग्राफिक है. मोस्ट ऑफ अस आर लाइक वी हैव केटर टू नॉर्थ, वेस्ट एंड साउथ. ईस्ट में अभी है हम लोग के पास एक्सपोर्ट्स, but we are concentrating more on this region. East में अगर आप हो तो we can obviously look into it. So location is not a barrier to us. That is one thing.
Again, this slide includes plastic goods. तो प्लास्टिक के हम लोग सब टाइप के प्लास्टिक के सब्सिडरी को भी कवर करते हैं. This is the contact details which you were asking. You can reach out to Pranjit. He works in my team only, so he can cater to everything, right? आप इसको दे दो. And I have also shared my email ID, so you can reach out to me as well. And we are based out of major cities, so we have our on ground team in Ahmedabad, Delhi, Bangalore, Calcutta, Mumbai, सब जगह है. So if you want face to face meeting also, we can cater to